Okay, good morning, everyone. We are there with the subject OC, chapter number 4, business service. Now, in this chapter, we have done what we have saw. We have saw the meaning of services. Now, what is in my services? It is an act of performance that one party offers to another party that is essentially intangible. Intangible होता है nature में, and it does not result in the ownership of anything. It is called as services. Then we have saw what is meant by business services. The business services means they are those services which help business to grow and which helps business to function smoothly. That is called as business services. Then we have saw what is meant by banking. Okay, so what is banking? It is a financial institution which deals with deposits and advances and other related services. In that, we have saw different types of banks. Okay, even we have completed with the functions of commercial bank. Okay, now today we will going to continue with what is meant by e-banking. Okay, and we will going to start with insurance also. Okay, so first we will going to see what is this e-banking means. So this e-banking stands for electronic banking. It is also called as virtual banking. E-banking क्या होता है? It stands for electronic banking and it is also called as virtual banking. Now under this e-banking, what exactly is just the operations are computerized. So under this e-banking, this service, the banking operations, they are computerized. अब actually में होता क्या है e-banking? So e-banking is a product which is designed for the purpose of online banking that enables you to have easy and safe access to your bank account. Okay, तो e-banking ये ऐसा product है जो design किया गया है and it is designed for the purpose of online banking where you can do the banking online. Okay, now what's the benefit of this? It helps to access your bank account in a very easy and in a safe manner. Okay, that's why it is said e-banking is a safe, fast, easy and efficient electronic service that enables you to access to your bank account and to carry out online banking services 24 hours a day and 7 days a week. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है इसकी जो सर्विस है you will get 24 hours a day and 7 days a week. Okay, and it's very easy and safest way of doing the banking transactions. Okay, and to carry out the online banking services. Is it clear? Now there are some elements which are there under this e-banking. One by one, we will going to see all the elements. Okay. Now, very first, it is there. It's ATM. What is the full form of ATM? Okay. The full form of ATM is automated teller machine. What it is? It is automated teller machine. Now, what is this ATM? Basically, it is an electronic machines which are operated by the customer by his own to withdraw or deposit money. Okay, तो ऐसा machine है which is operated by the customer, जो customer operate करता है और क्यों operate करता है? Either to withdraw or deposit money. Okay, it is also used for other banking transactions. इसके अलावा बहुत सारे banking transactions के लिए भी use होता है. For example, if you want to see the balance, कितना balance है आपके account में, then that can be वो भी आप देख सकते हो. If you want to transfer the money, if you want to request for the checkbook or for the bank statement. Okay, so these are also the facilities which are provided by this ATM, that is automated teller machine.
Okay, and a new facility has been added up is CDM, that is cash deposit machine. Okay, so what is automatic machine? Now the next element is credit card. So I hope everyone has saw credit card. So credit card is a payment card and it allows the card holder to pay for different transactions he performs. Okay. So what it does, it allows the card holder to pay for different transactions he performs. जो भी transactions वो कर रहे हैं, perform कर रहे हैं, उसको pay करने के लिए ये credit card basically use होता है. ठीक है. The issuing credit bank creates a revolving account and grants a line of credit to the customer or user. Credit card offer convenience to customer as customer need not carry cash. तो basically credit card क्या है? ये एक तरह का convenience है जो एक provide किया जाता है to the customer because basically nowadays many of the customer they don't carry cash. ठीक है, ज्यादातर cash carry नहीं करते हैं बिकॉज लमसम कैश जैसे अराउंड 40,000 50,000 ये जो कैश है ये हम कैरी नहीं करते हैं. ठीक है, तो फॉर दैट दिस क्रेडिट कार्ड ऑफर्स अ वेरी कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द डेबिट कार्ड. सो डेबिट कार्ड इज अगेन द is used. Okay, now most of the banks nowadays they offer debit card as soon as account is opened by account holder. जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है वैसे ये डेबिट कार्ड ऑफर किया जाता है बाय द बैंक. ठीक है, now through this debit card payments the amounts get deducted from account holders account, right? Some offers personalized debit and credit cards as per the requirement of customers. ठीक है, तो बेसिकली ये जो डेबिट कार्ड है जैसे आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है वैसे आपको ये डेबिट कार्ड आजकल प्रोवाइड किया जाता है और बेसिकली ये यूज किया जाता है फॉर एनी पेमेंट. इफ यू आर गोइंग फॉर एनी शॉपिंग तो फॉर दैट पेमेंट के लिए ये डेबिट कार्ड बेसिकली यूज करते हैं और जो भी अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट. ओके, सो these are the three elements: ATM, credit card and debit card. Now the next elements are RTGS, NEFT, IMPS. Okay, now what is this RTGS? It means it stands for real time gross settlement. Okay, so it is a real time gross settlement. Now what this is basically the two words, real time settlement and gross settlement. Now what is this real time settlement? It means payment transaction is not subject to any waiting period. Okay, so under this there is no need of waiting for doing these transactions. Okay, there is no waiting period. जो भी transactions होता है वो settle किया जाता है as soon as they are processed. Okay, so once the transaction has been processed, it is settled as soon as possible. The receiving bank has to credit the account of the client within 2 hours of receiving the fund transfer message. Okay, so if this RTGS, that is real-time settlement, is used, then there is no need of any waiting. Okay, once you're done with the processing work, then within 2 hours, ये जो आपका processing है of transfer the money, वो अपने आप क्या हो जाता है, complete हो जाता है within this 2 hours. ठीक है? Now, what is mean by gross settlement? It means that the transactions are settled on one-to-one basis without bunching with any other transactions. ठीक है, जो भी transactions होता है वो एक एक ट्रांजेक्शन ही होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक. आप दो ऐसे ट्रांजेक्शन करोगे तो वैसा ट्रांजेक्शन नहीं होता है. ठीक है, वन टू वन बेसिस पे ट्रांजेक्शन होते हैं. ठीक है, और जो मिनिमम अमाउंट है जो रेमिट होता है थ्रू दिस RTGS इज 2 लाख. ठीक है, 2 लाख तक ही आप ट्रांसफर कर सकते हो एंड देयर इज नो अपर लिमिट फॉर ट्रांजेक्शंस. ओके, however the amount changes from bank to bank. किसी बैंक का ज्यादा हो सकता है, ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हो, किसी बैंक में आप लिमिट क्या है वो कम है. ठीक है, so it depends upon the bank to bank. Okay, so what exactly this real time gross settlement is? It is basically a fund transfer system
where transfer of funds or money takes place from one bank to another bank on real time and on gross basis. Okay, what is this RTGS? Where the fund is transferred, the money can transferred from one बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हो on real time. Real time means there is no need of any waiting. ठीक है, within 2 hours जो भी money है वो transfer हो जाता है. And on gross basis means there is a systematic way. ठीक है, 1-to-1 basis पे ये transactions होते हैं. They are not bunching of the transactions. Okay, तो 1-to-1 basis पे होते हैं, इसलिए बोला on gross basis. Okay, it is the fastest money transfer system through banking channel. ठीक है, within 2 hours मतलब it is the fastest system जहाँ पे आप money transfer कर सकते हो. ठीक है, from one bank to another bank. Is it clear? RTGS, real time gross settlement. Now the next is NEFT. Now NEFT stands for National Electronic Fund Transfer. NEFT का full form क्या है? National Electronic Fund Transfer. Now under this system, funds are transferred electronically from one branch to another branch or from one bank to another bank in the country. Again under this system also जो फंड्स है वो ट्रांसफर किए जाते हैं या तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में. ठीक है, यानी से ऑफ द सेम बैंक or from one bank to this another bank account. Okay, so the money is transferred. Now the client has to give details of NEFT code of branch and account number of beneficiary to whom the money is to be transferred. Okay, so for NEFT 2 things have to be submitted, have to be given, 2 details have to be given of the client. Okay, the first है NEFT code of branch का NEFT code क्या है. ठीक है, and second the account number कि किसको money transfer करना है. ठीक है, तो बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, ये दोनों चीजें होनी चाहिए. Now the NEFT settlement takes place at particular time during working hours. Okay, तो ये जो settlement है NEFT का, ये working hours में ही आप कर सकते हो. ठीक है, for instance settlement of fund transfer request in NEFT system is done on half hourly basis. There are 24 half hourly settlement batches which runs from 8 AM to 7 PM on all working days of week. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो इसके बीच में होना चाहिए. इट शुड बी बेसिकली बैचेस विच इज रनिंग फ्रॉम 8 AM to 7 PM. ठीक है, इसके बीच में, और जितने भी वर्किंग डेज हैं उसी के बीच में आप ये NEFT कर सकते हो. ठीक है, नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन NEFT एंड RTGS? क्योंकि दोनों में क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक और फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर. लाइक, so what is the difference between the two? Now RTGS के केस में ट्रांसफर इज डन ऑन ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस. ठीक है, while NEFT is on deferred net basis where transactions are bundled together. ठीक है, RTGS के केस में एक one by one you will going to the transactions will be done, whereas NEFT के केस में a bundle of transactions can be done at the same time. एक ही बार में आप bundle of ट्रांजेक्शन से आप साथ में कर सकते हो NEFT के केस में, whereas RTGS के केस में 1 by 1 बेसिस पे ही ट्रांजेक्शंस होते हैं. ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द RTGS एंड NEFT. इज इट क्लियर एवरीवन? RTGS एंड NEFT. Now the next is IMPS. So this is a facility. So IMPS stands for Immediate Payment Services. So Immediate Payment Services. Now this facility allows the customers to instantly transfer funds to any other bank account. ठीक है, तो आप किसी भी बैंक अकाउंट में instantly आप funds transfer कर सकते हो. That's the importance of this IMPS. So this is the
immediate payment services facility which is provided to the customers, where the customers instantly can transfer the funds to any other bank account. Okay, so these are the three. Basically तीनों का same चीज है. RTGS में भी fund transfer होता है, NEFT में भी fund transfer होता है, IMPS में भी PS में भी fund transfer होता है. Is it clear, all the three? Now the next one is net banking and mobile banking. Now what is this by net banking and mobile banking? So the internet banking services enables a client to check various transactions, facilitate payments of various things, transferring funds, etc. तो ये जो नेट बैंकिंग है ये हेल्प करता है कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, कि वो बहुत सारे ट्रांजेक्शंस को चेक कर सकता है, वो पेमेंट कर सकता है बहुत सारे ट्रांजेक्शंस पे, वो मनी ट्रांसफर कर सकता है. ठीक है, तो दीज आर द फैसिलिटीज व्हिच आर प्रोवाइडेड अंडर दिस नेट बैंकिंग, जिसको हम इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं. ठीक है, नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस नेट बैंकिंग, the clients, they are able to transact business operations with the help of computers, laptops and other gadgets. Okay, पहले क्या होता था, बैंक में जाना पड़ता था और बैंक में जाने के बाद सारे transactions होते थे, but nowadays all the business transactions can be done because of this net banking, because of the help of the computers, laptops and other gadgets. Now what is this mobile banking? When we talk about mobile banking, it refers to the use of बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स. तो आजकल हम मोबाइल फोन से भी सारे बैंकिंग सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं, राइट. द क्लाइंट रजिस्टर विद द बैंक फॉर दिस फैसिलिटी गेट्स अ यूनिक कोड फॉर ट्रांजैक्शंस. ठीक है, एक यूनिक कोड मिलता है ट्रांजैक्शंस के लिए. इफ एनी ऑफ यू हैव ट्राइड दिस, ओके, एक यूनिक कोड प्रोवाइड किया जाता है बाय द बैंक इफ एनी ट्रांजैक्शंस हैव बीन डन. द क्लाइंट कैन परफॉर्म वेरियस ट्रांजैक्शंस. बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हम कर सकते हैं, जैसे हम बैलेंस का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसफर द मनी, वी कैन स्टॉप द पेमेंट ऑफ एनी थिंग, वी कैन इश्यू द चेक बुक, यू कैन सी ऑल द ट्रांजैक्शंस यू माइट हैव डन इन द लास्ट फ्यू डेज. ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है अंडर दिस मोबाइल बैंकिंग. ओके, so this is the difference between the mobile banking and net banking. Under net banking, it's help the business operations, banking operations. The transactions are done with the help of computers, laptops, and other gadgets. And under mobile banking, the business services can be used by the consumer with the help of the mobile phones. Is it clear? So these are the elements which we have saw of e-banking. So ATM, credit card, debit card, RTGS, NEFT, IMPS, and mobile banking and net banking. Okay, so these are the 7 elements of electronic banking, that is e-banking. Is it clear everyone this much? Okay, so we have done with the banking. Now we will going to start with the second part, next part, that is insurance. Now what is meant by insurance? So insurance is a means of protection from financial loss. ठीक है, तो अगर कोई financial loss होता है बिजनेस को, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मीन्स है, जो मीन है वो क्या है? इट इज इंश्योरेंस. सो इंश्योरेंस इज अ वे, इट इज अ मीन वेयर द फाइनेंशियल लॉस कैन बी protected. Okay, now it is a contract between the insurer and the insured. Okay, so two parties are involved in insurance. Okay, so it is a contract between the two parties. The one is the insurer and the second one is the
insured, okay, whereby the insurer agrees to compensate the okay, so insurance क्या है? It is a contract between the insurer and insured, whereby the insurer agrees to compensate the insured against the loss. So if any loss is suffered by the insured, then this insurer it agrees that he will going to compensate the loss if any loss is faced by the insured. Now the insured has to pay a certain fixed sum of money on timely basis to the insurer. Now insurer is giving the or he is agreeing to pay the compensate, okay, if any loss is occurred by the or it is incurred accidentally by the insured, okay. So in for that what insured has to do, insured has to pay a certain fixed sum of money, ठीक है, on timely basis, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम, ठीक है. So every month or every quarterly depends, ठीक है, what insured has to do, insured has to pay a certain fixed of money, sum of money to the insurer if the insured wants the insurance for his finance or for his asset. Okay. Is it clear, everyone? What is insurance? Simple. Insurance is a contract between two parties. Who are these parties? Insurer and insured, where the insurer agrees to compensate the loss, ठीक है, which is suffered by the insured. Okay. यहाँ पे for this, what insured has to do? Insured has to pay a certain fixed sum of money on timely basis to the insurer. Okay, so basically insurance is a protection from the financial loss if any loss is faced by the insured. Now हमने देखा what is insured, what is insurer. Now what exactly this, ठीक है. So there are basic terms. ये सारे जो terms है, insured, insurer, premium, policy, claim, proposal, subject matter. These are the terms that you will going to hear again and again in this insurance. जब भी हम insurance पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारे terms आपको बार-बार आएंगे सामने. Now what is this terms? So सबसे पहला है insured. Now who is this insured? The person who is protected against certain losses. ठीक है. इंश्योर्ड कौन होता है? वो पर्सन जो प्रोटेक्टेड होता है अगेंस्ट सर्टेन लॉसेस. जो भी लॉस होता है उससे जो प्रोटेक्टेड रहता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज इंश्योर्ड. इंश्योर्ड इज आल्सो नोन एज एश्योर्ड इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योर्ड को एश्योर्ड भी कहते हैं, ठीक है. एंड ही इज द पॉलिसी होल्डर. हु इज इंश्योर्ड? ही इज अ पॉलिसी होल्डर. So that person who is protected against the losses, that person is called as insured. Now who is an insurer? Insurer कौन होते हैं? The firm or person who agrees to compensate the insured against losses for consideration. ठीक है. तो ऐसी firm या ऐसा person जो agree करता है कि what he will going to do, he will going to compensate. किसको कंपेंसेट करेगा? इंश्योर्ड को कंपेंसेट करेगा अगर कोई भी लॉसेस होता है फॉर एनी कंसीडरेशन टू द इंश्योर्ड. ठीक है. तो इंश्योर्ड कौन है? जो प्रोटेक्टेड रहता है लॉसेस के से अगेंस्ट द लॉसेस, और इंश्योरर कौन होता है? जो कंपेंसेट करता है इंश्योर्ड को अगेंस्ट द लॉसेस. ओके. नेक्स्ट is premium. Now what is this premium? So the consideration for which the insurer agrees to insure the insured, it is paid by the insured to the insurer. अब insurer what he is doing? He is agreeing that he will going to compensate the insured against the losses. अब वो free में करेगा कि ये काम? नहीं. Okay. So for that a certain amount of money has to be paid, ठीक है, by the insured to the insurer. ठीक है. इंश्योर्ड ने इंश्योरर को a certain sum of money, fixed sum of money has to be paid to the insurer. That is called as premium. ठीक है. जैसे अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस निकाला है, what we pay life insurance premium amount.
ठीक है, ठीक है. तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इट इज द अमाउंट which a insurer has to pay to the insured. Now the next is policy. Now what is policy? The statement of contract between the insured and insurer. Policy क्या है? Contract है. It is a statement of contract between the insured and insured. And in this insurance contract, all the terms and conditions which are related to this insurance contract वो रहता है इस पॉलिसी के अंदर. ठीक है, तो जो भी टर्म्स और कंडीशंस है which are there for the of the insurance contract, everything is mentioned under this policy. So what is this policy? It is a statement of contract between the insured and insurer. The next is claim. Now claim is the demand which is made by the insured to the insurer to compensate for loss which is occurred due to mishap. ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ठीक है, कुछ भी मिसहैप हुआ, तो एट दैट टाइम द इंश्योर्ड जब वो डिमांड करता है पैसे की, ठीक है, कंपेंसेशन की डिमांड करता है फ्रॉम द इंश्योरर, दैट इज कॉल्ड एज क्लेम. नेक्स्ट वन इज प्रपोजल. नाउ प्रपोजल इज अ रिटन रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है, तो प्रपोजल क्या है? जहाँ पे एक रिटन रिक्वेस्ट जाता है इंश्योर्ड के पास से, किसको जाता है? इंश्योरेंस कंपनी को जाता है टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी, कि वो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को इशू करे. तो इट्स अ प्रपोजल फ्रॉम इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी. एंड लास्ट वन इज सब्जेक्ट मैटर. सो इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट और एंटिटी. ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट मैटर नहीं रहेगा तो किस पे इंश्योरेंस निकालेंगे, राइट? सो फॉर मी, बिकॉज मेरे लिए मेरी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो माई सब्जेक्ट मैटर विल बी माई लाइफ. तो मेरी लाइफ है, यानी मैं लाइफ इंश्योरेंस निकाल रही हूँ, विच मीन्स माई सब्जेक्ट मैटर इज माई लाइफ. अगर मैं मेरे एसेट पे या प्रॉपर्टी पे निकाल रही हूँ, ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाएगा? इन दैट केस विल बी माई प्रॉपर्टी. अगर मेरे को मेरी शिप, इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, फॉर दैट my subject matter will be my cargo, my ship. Okay, the subject matter is very important, क्योंकि because of this subject only हम पता चलता है कि किस पे इंश्योरेंस निकालना है, राइट? So it refers to the subject or entity that is life, property, cargo or ship, etc., which is insured against which the policy is taken. ठीक है, तो इनके अगेंस्ट में ही पॉलिसी ली जाती है. If there will be no subject matter, तो मैं किस पे पॉलिसी लूंगी, मैं किस पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, राइट? तो सब्जेक्ट मैटर. सो दीज आर द टर्म्स दैट यू विल गोइंग टू हियर अगेन एंड अगेन जब हम ये इंश्योरेंस पढ़ेंगे. इंश्योर्ड कौन होता है? जो पॉलिसी निकालता है. ठीक है, इंश्योरर कौन होता है? जो कंपेंसेट करता है इंश्योर्ड को जो भी लॉस होता है. प्रीमियम इज द अमाउंट विच इज पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर. पॉलिसी is a contract, a statement of contract between insured and insurer. Claim is the demand which is done by the insured to the insurance against the loss. Proposal written request होता है insured की तरफ से insurer को to issue insurance policy. And subject matter is on which the policy is to be taken. ठीक है, that is the subject matter. Is it clear? This all terms. Okay, now the next one is the principles of insurance. Okay, so there are how many principles of insurance? We have already done this in 11th standard. I hope सबको याद है. किसी को याद है? We have done this in 11th standard. So there are 7 principles of insurance. Now the very first principle is principle of insurable interest. पहला प्रिंसिपल क्या है? Principle of insurable interest. What does it means? Insurable interest means some financial interest in the subject matter. Okay, so whatever our subject matter जो भी है हमारा, उसमें अगर किसी को financial interest होता है, it is called as insurable interest. Okay, तो interest का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो हम लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं या हम क्रेडिटर्स या डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं. इंटरेस्ट का मतलब है
मुझे जो चाह है, ठीक है, आई एम हैविंग एन इंटरेस्ट, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है, दैट इंटरेस्ट इज दिस, ओके। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स इफ देयर इज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अगर मुझे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है मेरे सब्जेक्ट मैटर में, नाउ अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, मैं इंश्योरेंस निकालूंगी क्या? आई विल नॉट गोइंग टू टेक इंश्योरेंस, राइट? So there should be certain insurable interest in the subject matter of insurance. Insurable interest is applicable to all insurance contract. जितने भी insurance contract है उन सब में वो contract कब हो सकते हैं? If I am having an interest in that, ठीक है, अगर मुझे इंश्योरेंस निकालना है तो इंश्योरेंस निकालने के लिए आई शुड हैव एन इंटरेस्ट, तभी मैं उस पर इंश्योरेंस निकालूंगी। अगर मुझे किसी चीज पे इंटरेस्ट नहीं है तो क्या मैं उसका इंश्योरेंस निकालूंगी? क्या नहीं निकालूंगी, राइट? सो इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस. It is said to have insurable interest in subject matter when the existence of that subject matter puts the insured in financial benefit. Okay, so if I am having, मुझे अपनी लाइफ का सेफ्टी चाहिए, राइट? मुझे अपनी लाइफ सेफ्टी चाहिए, राइट? तो ही मैं क्या करूंगी? अपने लाइफ इंश्योरेंस निकालूंगी। अगर मैं, मुझे अपनी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मैं, मुझे लगता है इट्स ओके, चलता है, चल जाएगा, राइट? तो मैं इंश्योरेंस नहीं निकालूंगी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, राइट? सो देयर शुड बी एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर बेसिकली व्हेन इट इज गिविंग यू अ फाइनेंशियल बेनिफिट। अगर वो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दे रही है तो इंश्योरेंस निकालना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। Whereas non-existence of subject matter put him into financial loss. Okay, so if there will be non-existence, अगर कोई अनएग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर का, तो फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। ओके, सो वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल व्हाट इज इट इज सेड, there should be an insurable interest in the subject matter of insurance. जो भी आप इंश्योरेंस निकाल रहे हो उस पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस. इज इट क्लियर? Now the next one is principle of utmost good faith. Now what is this? Now in all types of insurance contract, both the parties must have utmost good faith towards each other. The insurer and insured must disclose all material facts clearly, completely, and correctly, right? So as I said, this insurance is a contract between two parties, insured and insurer. So there should be a utmost good faith. दोनों को एक दूसरे पे बहुत ज्यादा faith होना चाहिए, ठीक है? और इसीलिए insured और insurance should disclose all the facts clearly, completely and correctly. ठीक है? अगर insured है तो उसको अपने सारे facts, सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली और कंप्लीटली बताना चाहिए इंश्योरर को, और जो इंश्योरेंस कंपनी है या इंश्योरर है उसको भी अपनी सारी इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या इंश्योरेंस पॉलिसी, एवरीथिंग शुड बी informed to the insured clearly and completely, right? So there should be an utmost good faith between the two parties, that is insured and insurer. Okay, now for example, is given, Mr. Shantanu has not provided information regarding his heart surgery at the time of taking policy. ठीक है, मिस्टर शांतनु एक इंश्योर्ड है और उसने इंश्योरेंस निकाला और उसने वो इन्फॉर्मेशन, कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि उसकी हार्ट सर्जरी हुई है टू द इंश्योरर, राइट? नाउ आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद व्हाट हैपेंस, इंश्योरेंस कंपनी कम्स टू नो अबाउट दिस फैक्ट. इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि इस पर्सन को हार्ट सर्जरी हुई थी लेकिन इसने हमें इन्फॉर्म नहीं किया. Now Mr. Shantanu has not provided correct and complete information at the time of taking policy. That's why the insurance company refuses to give compensation to his family member. ठीक है, क्योंकि पॉलिसी निकालते वक्त ये इन्फॉर्म नहीं किया गया था बाय द इंश्योर्ड मिस्टर शांतनु कि उसने हार्ट सर्जरी कराई. तो मरने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्या क्लेम किया, क्या कहा कि आई विल नॉट,
not going to pay or compensate because ये information हमें नहीं बताई गई थी, right? So ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों को एक दूसरे पे शायद फेथ नहीं था या उन्होंने एक दूसरे से information छुपा के रखी, right? So the second principle says there should be an utmost good faith between the insured and the insurer. Okay. Now the next is principle of indemnity. Now what is indemnity? It means a guarantee or assurance to put the insured in same financial position in which he was immediately prior to the happening of the uncertain event. Okay. So indemnity क्या है? It is a guarantee which is given to the insured कि वो उसी financial position में वापस आ जाएगा, ठीक है, जैसे वो पहले था कोई भी uncertain event होने के पहले, ठीक है. So that is called as indemnity. So basically it is a guarantee which is given by the insurer to the insured. Now this principle is basically applicable to the fire, marine and general insurance. In principle of indemnity is not applicable to life insurance. क्योंकि एक बार इंसान मर गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसको वापस जिंदा करके आपको नहीं दे सकता, राइट? तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ये गारंटी है जो दिया जाता है टू द इंश्योर्ड कि वो उसी फाइनेंशियल पोजीशन में वापस आ जाएगा जैसे वो पहले था, ठीक है. लेकिन इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दिस गारंटी इज नॉट गिवन क्योंकि हम इंसान को मरने के बाद वापस जिंदा नहीं कर सकते, राइट? सो इट्स अ लॉस which cannot be replaceable, ठीक है. Now under this principle the insurer agrees to compensate the insured for the actual loss suffered. जो भी actual loss suffer किया है insured ने, ठीक है, उसको compensate करता है insurer under this principle. Okay. For example, if the property is insured for rupees 2 lakh and if the loss by fire is rupees 1 lakh, then the insured can claim compensation of rupees 1 lakh only. ठीक है. तो अगर इंश्योरेंस 2 लाख का निकाला है और उसको लॉस 1 लाख का हुआ है तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ है उसको 1 लाख का, तो कंपनी कितना कंपेंसेट करेगी? ओनली रुपीज 1 लाख टू दी इंश्योर्ड. ओके. तो इंश्योरर विल गोइंग टू कंपेंसेट द एक्चुअल लॉस. अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी निकाली है और आपको 1 लाख का लॉस हो रहा है तो आपको 1 लाख रुपए ही कंपनी कंपेंसेट करेगी, ठीक है, वो आपको 10 लाख नहीं देगी, राइट? सो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वेयर द ओनली द एक्चुअल लॉस which is suffered by the insured is compensated by the insurer. Okay, so three principles, I hope three principles are clear to you. Principle of insurable interest, principle of utmost good faith and principle of indemnity. Is the three are clear to you? Now the next one is principle of subrogation. The next one is principle of subrogation. So this principle is applicable to all contracts of indemnity. Indemnity के जो भी contracts हैं उसी को ये principle applicable होता है. As per this principle, after the insured is compensated for the loss due to the damage of the property insured, the right of ownership of such property passes on to the insurer. This principle is applicable only when the damaged property has any value after the event causing the damage. Okay, so for example मेरे एक फर्म है, ठीक है, और उसमें assets है मेरे कुछ और वो assets में आग लग गई, right? Now when what the insurance company will going to do, insurance company will going to compensate me with the loss, but once the company will going to compensate me with the loss, इसके बाद में जो भी assets हैं, ठीक है, जो भी assets हैं मेरे कंपनी में बचे हुए हैं अगर वो अच्छे हैं, ठीक है, और उनको कोई डैमेज नहीं हुआ है तो वो सारे के सारे एसेट्स किसके पास चले जाएंगे? टू दी इंश्योरर. किसके पास चले जाएंगे? इंश्योरर, ठीक है. तो अंडर दिस प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन द कंपेंसेशन इज द इंश्योर्ड गेट्स द कंपेंसेशन फॉर द लॉस ऑफ द डैमेज प्रॉपर्टी, बट उसके बाद में जो भी राइट है, ओनरशिप है ऑफ सच प्रॉपर्टी, इट passes away टू द इंश्योरर. ओके. For example, Mr. A owns two-wheeler. Mr. A के पास two-wheeler है. The vehicle was stolen and subsequently Mr. A filed a complaint in local police station. Upon receiving report from police, the insurance company compensated fully Mr. A for the loss of vehicle. Later on, the stolen vehicle was recovered from the police
In this situation, the owner of the vehicle does not have any claim of the vehicle as he has already subrogated, that is transferred his ownership rights of the vehicle to the insurer. So the insurer gets every right to sell or to scrap the said vehicle. तो अगर मिस्टर ए का एक व्हीकल है, अगर वो चोरी हो गया तो और कंपेंसेशन मिल गया उसको, तो जो व्हीकल है उस पर उसका कोई राइट नहीं होगा, क्योंकि उसका ओनरशिप क्या हो जाएगा, इट विल बी सबरोगेटेड, ठीक है, टू द इंश्योरर. अब इसका ओनरशिप किसके पास है, इंश्योरर के पास, राइट. सो लाइक दिस is there under this principle of subrogation. Now the next one is principle of contribution. What is this principle of contribution? Now this principle is applicable, again applicable to all contract of indemnity, and where the insured has taken out more than one policy for the same risk or subject matter. Under this principle, the insured can claim the compensation only to the extent of actual loss, either from one insurance or all the insurer. If the one insurer pays full compensation, then that insurer can claim proportionate amount from other insurer from whom insured has taken policy. So under this principle of contribution, what is that? जो insured है वो एक से ज्यादा पॉलिसी निकालता है एक ही रिस्क पे या एक ही सब्जेक्ट मैटर पे, ठीक है. तो या तो एक इंश्योरेंस कंपनी उसको सारा का सारा पैसा देगी इंश्योरेंस का, और बाद में वो दूसरे इंश्योरर से उतने ही प्रोपोर्शनेट में पैसे वापस ले लेगी, या तो जितने भी इंश्योरर के पास से उसने इंश्योरेंस निकाला है इंश्योर्ड ने, वो सब उसको थोड़ा थोड़ा कंपेंसेट करेंगे उसके लॉस के लिए, ठीक है. तो दिस कैन बी डन अंडर दिस प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, वेयर द इंश्योर्ड कैन टेक वन और मोर पॉलिसी ऑन द सेम रिस्क और ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर. लेकिन जब कंपेंसेशन की बात आती है, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी पूरा कंपेंसेट कर रही है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी पूरा कंपेंसेट कर रही है वो दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से अपना पैसा लेगी, ठीक है. या तो फिर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस निकाला है वो थोड़ा थोड़ा करके इंश्योर्ड को कंपेंसेट करेंगे, ठीक है. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन. नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ causa proxima. Now under this principle, what is this means? It means when the loss is caused by more than one causes, then proximate cause of loss should be taken into consideration to decide the liability of the insurer, ठीक है. तो अगर सपोज मेरी शिप है, ठीक है, और वो पानी में गई, राइट, तो अब यहाँ पे जो मेरी शिप है उसमें पहले आग लगी, ठीक है, और आग लगने की वजह से होल हो गया और वो डूब गई, ठीक है. नाउ इन दिस केस जो पहला चीज है वो कॉज क्या था, आग, ठीक है. पहला कॉज क्या था, आग लगी, राइट. तो यहाँ पे व्हाट आई विल गोइंग टू कंसीडर, आई विल गोइंग टू कंसीडर एज अ फायर इंश्योरेंस. उसको मैं कैसे कंसीडर करूंगी, आई विल गोइंग टू कंसीडर एज अ फायर इंश्योरेंस, क्योंकि उसको पहले आग लगी उसके बाद में वो सिंक हुई, राइट. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा proxima. Now the property is insured against some causes and not against all causes. So in such case, the proximate cause of loss is to be found. ठीक है. तो एक्चुअल में लॉस किस वजह से हुआ है, आग लगने की वजह से हुआ या पानी में डूबने की वजह से हुआ. आग लगने की वजह से पहले हुआ, क्योंकि पहले अगर आग नहीं लगती तो पानी में डूबता ही नहीं बोट, राइट. तो पहले जो रीजन क्या है, पहला कॉज क्या है, आग लगी, राइट. तो पहला जो कॉज है उसी को फोकस किया जाएगा, जो सेकंड कॉज है उसको फोकस नहीं किया जाएगा, राइट. So that is called as principle of causa proxima. Is it clear, everyone? Now the next and the last is principle of mitigation of loss. Now insured always try to minimize the loss of the property. ठीक है. तो अगर मेरे घर में आग लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि चलो इंश्योरेंस निकाला तो जलने दो सब कुछ, ऐसा होता है क्या, नहीं. व्हाट आई हैव टू डू, जितना हो सके इतना सामान में बचा सकूं, ठीक है. तो इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड, ही शुड ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी. जो भी उसका प्रॉपर्टी है उसका जितना कम लॉस हो उसको हमेशा उसके लिए रेडी रहना चाहिए. The insured must take all possible measures and necessary steps to control and reduce losses. Hence, it is the responsibility of the insured to protect the property and avoid the losses. ठीक है. जितना हो सके रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योर्ड की कि अगर ऐसा कुछ फायर लग गया या
कोई भी डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो ही शुड ट्राई कि जितना हो सके वो लॉस को मिनिमाइज करे या लॉस को अवॉइड करने की कोशिश करे, ठीक है। पर ठीक है, तो दिस कम्स अंडर दिस प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, ठीक है। सो दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इंश्योरेंस को लेके चलते हो, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, utmost good faith, indemnity, subrogation,